Hello children, welcome to class 1 computers. Children, in our previous video we were doing worksheet 1. This is our first worksheet. We have completed chapter 1, 2 and 3 children, and we will be doing different worksheet before starting our next chapter. So children, these worksheets are based on the chapter which we have already completed. So this first worksheet was based on chapter 1. So children, we had completed first question of this worksheet. Today we are going to do the second question. So children, as we know, in first question we had studied about tick the correct option. In our first question we had tick the correct option. We had completed the question. So as we usually do, we will revise the first question and then move further into the worksheet. So children, यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसे हम पहले रिवाइज कर लेते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था चिल्ड्रन, डैश इज अ मैन मेड डिवाइस. सो हियर वी हैड 3 ऑप्शंस चिल्ड्रन. अमंग द 3 ऑप्शंस वी हैड करेक्ट आंसर वाज कंप्यूटर, बिकॉज कंप्यूटर इज अ मैन मेड डिवाइस. एज वी नो, कंप्यूटर इज मेड बाय मैन, that is why it is known as man made device. And second one children, nature has created things called dash. Nature has created things called dash. As we know children, the things which are created by nature are called natural things. So the answer is natural things. Here also we had 3 options and natural thing is the correct answer. So you will write here natural things. After that children, third one, dash machines are run by man. So children, in the chapter we have studied about 2 types of machine. One machine which is run by man and the other machine which is run by electricity. So the one which is run by man is called manual machine. So here you will write answer as manual machine. So the answer is manual machine. Then fourth one children, electronic machines. Electronic machines are run on electricity. As we know children, electronic machines are run on electricity. So here the answer is electronic machine. हमारा क्वेश्चन था dash machines are run by electricity. So you will write electronic machines. उसके बाद fifth one children, machines that help you to move. So children, in the chapter we have studied about different types of machine, and there are some machines which entertain us, there are some machines which move us from one place to another, and there are some more machines which help us in doing our day-to-day household chores. So children, here the machine that helps you to move, that is the vehicles. तो आप यहाँ पे किसी भी व्हीकल का नाम लिख सकते हो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन थे. उसमें बस दिया था, तो we will put a tick in front of bus and write bus. Correct answer is bus. Bus is a machine which helps us in moving from one place to another. Then children, next one, machines that help you to do work with ease. वो machines जो हमें किसी भी काम को आसानी से करने में help करते हैं. So children, our next question is machines that help you to do your work with ease. So children, this is another type of machine. As I told you, there are many types of machine. Among these, there are few machines which make our work easy, means which help us in doing our work easily. So here children, work means household chores. So what all work we do in our house related to day life, उन सारे काम को आसान बनाने के लिए, जैसे वी हैव रेफ्रिजरेटर, वी हैव वॉशिंग मशीन, वी हैव वैक्यूम क्लीनर, ये सारी मशीनें होती हैं. इनको हम कहते हैं द मशीन्स विच हेल्प अस इन डूइंग आवर वर्क विथ ईज, जो हमारे काम को आसानी से करने में हेल्प करते हैं, जो हमारे काम को आसान कर देते हैं. वो we are talking about that type of machine. So here children, here in the option we had a vacuum cleaner. So you will put a tick in front of vacuum cleaner, क्योंकि using a vacuum cleaner your work of cleanliness becomes easy. तो यहाँ पे हम वैक्यूम क्लीनर के आगे टिक लगाएंगे और ब्लैंक पे वैक्यूम क्लीनर लिखेंगे. उसके बाद चिल्ड्रन, मशीन्स that entertain you. This is another type of machine children which makes which entertain us by for example we can watch in इसमें इस वाले क्वेश्चन के नीचे हमारे पास 3 ऑप्शंस थे and the correct option was television. So television children, through television we entertain ourselves. television के थ्रू हम अपना entertain करते हैं, और ये television हमें फिल्म दिखाता है या कार्टून दिखाता है, और ये सब देख करके हमारा entertainment होता है, और that is why the correct answer is television. तो आप television के आगे सही का निशान लगाएंगे. Then children, we have some more question.
next question is dash. Dash is an electronic machine. What is an electronic machine, children? Here we had different option. One of the option was a laptop. So laptop is a machine which is used by electricity, which works on which runs on electricity. So you will put a tick in front of laptop. So laptop is an electronic machine. Then we have ninth one, children. Computer can remember many things. तो यहाँ पे डैश में हमें रिमेंबर लिखना है. सही आंसर रिमेंबर है क्योंकि कंप्यूटर बहुत सारी चीज़ों को याद रख सकता है. उसके बाद चिल्ड्रन, flower and clouds are dash things. As I told you children, there are a few things which are created by nature, and in that the example of natural things we have flowers and mountains or clouds. ये सारे natural things है which are created by nature. इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे natural, blank पे हम natural लिखेंगे because flowers and mountains or clouds are created by nature, so these are natural things. तो यहाँ पे natural के आगे हम सही का निशान लगाएंगे and it is the correct answer. So with this children, we have completed or revised question number 1. Let us do question number 2. Question number 2 is children, fill in the blanks. F-I-L-L, fill in the blanks. B-L-A-N-K-S, blanks. Fill in the blanks. उसके बाद यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है, there are few questions children, and along with each question we have 2 options. So we will put a tick in front of the correct answer and we will write the answer in the blank. So first question हमारा है, as you can see here, computer, C-O-M-P-U-T-E-R, computer is a dash machine, M-A-C-H-I-N-E, machine. तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है स्मार्ट ऑब्लिक बोरिंग. तो कैन यू टेल मी चिल्ड्रन व्हाट टाइप ऑफ मशीन अ कंप्यूटर इज? What type of machine a computer is? As we know children, computer does any work very smartly. That is, it does any work very fast, and also it saves our time and it does any work very accurately. So it is a smart machine क्योंकि किसी भी काम को ये बहुत फास्ट करता है, एक्यूरेटली करता है. इसकी वजह से हमारा टाइम भी बच जाता है. तो हम इसे स्मार्ट मशीन कहेंगे, बोरिंग नहीं कहेंगे. सो द आंसर इज स्मार्ट. यू विल राइट स्मार्ट here, S-M-A-R-T, smart machine. Then second one children, second में हमारे पास है, we can play dash on a computer. We can play P-L-A-Y, play dash on a computer, C-O-M-P-U-T-E-R, computer. What can we play on computer? Games और मैसेजेस. हम क्या प्ले कर सकते हैं? प्ले तो हम गेम्स कर सकते हैं ना. तो यू विल राइट हियर G-A-M-E-S, गेम्स. वी कैन प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर. सो यू विल पुट अ टिक हियर एंड राइट गेम्स. उसके बाद थर्ड में हमारे पास है मैनुअल मशीन्स आर रन बाय. मैनुअल, M-A-N-U-A-L, मैनुअल machines, M-A-C-H-I-N-E-S, machines are R-U-N, run by. Manual machines are run by dash. So children, what do you mean by manual? Manual, man, run by man or electricity, run by man or electricity. So children, manual machines are run by, as I told in the previous question, manual means a machine which is run by man. So children, answer is man. You will put a tick here and write M-A-N. So there are 2 types of machine. One is run by man and the other is run by electricity. So manual machine means a machine which is run by man. So you will write here man and put a tick on option 1, that is man. So children, this is question number 3. Now we'll do question number 4. Question number 4 children, we have dash is a manual machine. Now here 2 machines are given, 2 options are given. Dash is a
a manual machine. Dash is a manual machine. In bracket you have a laptop oblique, you have typewriter, WRITER, typewriter. तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है लैपटॉप और दूसरा है टाइपराइटर. सो हियर यू कैन से चिल्ड्रन, डैश इज अ मैनुअल मशीन. आप सभी को मालूम है व्हाट इज मैनुअल मशीन. प्रीवियस क्वेश्चन में, उसके भी पहले क्वेश्चन में वी हैव डिस्कस्ड मैनुअल मशीन इज द वन विच वर्क्स, विच इज ऑपरेटेड बाय अ मैन, विच इज यूज्ड बाय अ मैन और विच रन्स बाय मैन. तो यहाँ पे टाइपराइटर रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, whereas laptop runs on electricity, whereas typewriter runs by man. So the answer is typewriter. तो यहाँ हम लिखेंगे typewriter. So यहाँ पे हम लिखेंगे typewriter. उसके बाद चिल्ड्रन, ये हमारे 4 क्वेश्चंस है. कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन. We can play games on a computer. Manual machines are run by man. Typewriter is a manual machine. So these are 4 questions which we have done. Now we'll do question number, इसका 5th option, 5th blank है. Last one is a computer, 5th one है a computer, COMPUTER, computer never makes dash. And the options are mistake, computer never make mistakes or drawing. So what is the correct answer? यहाँ पे mistake होगा या drawing होगा. यहाँ पे mistake होगा या drawing होगा. तो कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता. ड्राइंग तो वो करता ही है, मिस्टेक नहीं करता. तो यहाँ पे हम लिखेंगे MISTAKE, मिस्टेक. हम यहाँ पे टिक करेंगे और आंसर में लिखेंगे मिस्टेक. अ कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक. कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता है. तो विद दिस चिल्ड्रन वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर B also. So let us do question number C. In question number C we have children true and false. हमारे पास true and false है. तो आप इन सबको लिखोगे और याद करोगे. You will learn these question, write these question answer and learn it. अब children, here we have some true false. Let us solve these true false, and these true false are from all the 3 chapters which we have completed till now. अभी तक हमने जो भी 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए उन सभी के से बेस्ड ये ट्रू एंड फॉल्स है. तो फर्स्टली चिल्ड्रन, हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर C. क्वेश्चन नंबर C में हमारे पास है, या हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2, 3 में हमारे पास है राइट, WRITE, राइट. T for, FOR for, TRUE, true, and F for, FOR for, false statement. False statement. अब इसके बाद फर्स्ट वन इज चिल्ड्रन, फर्स्ट वन यू कैन सी अ कीबोर्ड हैज 2 buttons called keys. अ कीबोर्ड, सॉरी 2 नहीं, small buttons. A keyboard have, HAVE, have small buttons called, a keyboard have small buttons called KEYS, keys. So children, as we know, keyboard is a part of computer which is used for typing in computer. And how do we type in a computer? We type in a computer using the small buttons which are present on the keyboard. These buttons are called keys. So this statement is right, that a keyboard has small buttons called keys. So this statement is true and you will write B for true. Now second one children,
A keyboard have small buttons called keys is a true statement. As we know, there are small buttons present on the keyboard which is known as keys. उसके बाद हमारे पास next है children, a computer works very slowly. So is it true children? क्या कंप्यूटर बहुत धीरे चलता है, बहुत स्लो चलता है? So no, this statement is also wrong. So you will write here F for false. So यहाँ पे second है a computer, COMPUTER, computer. Next statement is a computer works very slowly. As we know children, a computer works very fast. So this statement is wrong and you will write F for false here. A computer works very slowly is a wrong statement. So you will write F for false here. Then second one is children, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा second question, third is machines are man-made things. Third is machines, MACHINES, machines are man-made, MADE, made. Machines are man-made things. So what do you say children? Is it true or false? Machine is a man-made thing. Is it true or false? Machine is a man-made thing. Is it true or false? Of course children, it is true. As we know, computer is a man-made thing. या कोई भी मशीन, जो भी मशीन हमने यहाँ पे पढ़ा है, सभी man-made है, इसलिए हम इनको कहेंगे man-made thing, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे T for true. So all the machines are made by man, therefore the machines are man-made things. Then next true false is a computer can show movies. Fourth one, a COMPUTER, computer, can show SHOW, show movies. So is it true children? A computer can show movies? Is it true children? A computer can show movies? Yes, it is true, because we can watch movie on computers, or a computer show movie is a true statement. So you will write T for true here. Then children, fifth one, 5 में हमारे पास है, fifth one है a computers can walk from one place to another. Is it true children? A computer can walk from one place to another? No. As we know, computer is a machine and it cannot walk from one place to another. So you will write false. A computer can walk from FROM, from one place, 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 to an other. A computer can walk from one place to another. तो यहाँ पे a computer can walk from one place to another. Computer एक machine है and it cannot walk from one place to another. So this statement is false and you will write F for false. So children, we have come to the end of this exercise also. You can see here we have some statements. We are going to read it and then whether it is true or false. एक बार और पढ़ते हैं हम. तो यहाँ पे children, a keyboard, एक जो कीबोर्ड होता है, जो हम सभी जानते हैं, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर. उसमें छोटे छोटे बटन्स होते हैं, उस बटन के थ्रू हम कुछ भी कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन, द स्मॉल बटन्स आर कॉल्ड कीज. वी ऑल नो द स्मॉल बटन्स प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज. सो द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड दैट इज व्हाई वी हैव रिटन हियर T for true. देन अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी स्लोली. जो कंप्यूटर है बहुत धीरे काम करता है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट. सो वी हैव रिटन F for false. मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स. जो मशीन होते हैं वो मैन मेड थिंग होते हैं. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जितनी भी मशीन्स होते हैं सब मैन ने बनाया है. इट इज मेड बाय मैन, दैट इज वाई वी कॉल इट एज मैन मेड थिंग. सो हियर वी हैव रिटन T for true. देन a computer can show movies. A computer can show movies. Of course a computer can show movie. So this statement is also true. We have written T for true here. Then a computer, sorry यहाँ पे computer होगा children. A computer, COMPUTER, computer can walk from one place to another. A computer can walk from one place to another. Of course children, a computer cannot walk
from one place to other. As we know, computer is a machine and it cannot walk from one place to another. So this statement is false and you will write F for false here. ये statement गलत है, इसलिए आप यहाँ पे F for false लिखोगे. So with this, children, we have come to the end of this question. We will do our next question. हमारा next question है, children. Let us see. Here some words are given and some letters of the words are missing. We are going to complete the word after reading the clues given with the blank. So let's start, children. Our next question is, guess the area where computers are used. Guess the areas where computers are used. So here in question number D is guess the areas, A-R-E-A-S, areas where W-H-E-R-E, where computers are used. So here we have two questions, children. Used, इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन है, हमें क्लूज दिए हैं. We are going to find out the area where these computers are used. जैसे कि help, H-E-L-P, help, doctors, D-O-C-T-O-R-S, doctors, in diagnosing, in D-I-A-G-N-O-S-I-N-G, diagnosing the diseases, D-I-S-E-S-E-S, diseases. So children, here we have a box. In box we have some of the letters given and we are going to write the remaining. So first one is H, पहला है H, फिर है dash, फिर है S, फिर है P is given, and then we have next letter, then we have one more letter, and last letter L is given. So here we have 3 blanks and here we have 1. So children, help doctors in diagnosing the disease. Which is the place where the doctors diagnose the disease, children? The place where doctors diagnose the disease. Diagnose का मतलब होता है बीमारी का पता करना. डॉक्टर कहाँ रहते हैं? हॉस्पिटल में रहते हैं, और हॉस्पिटल में वो बीमारी जो भी जाता है अपने प्रॉब्लम लेकर के उसकी बीमारी का पता लगाते हैं, उसे डायग्नोस करते हैं. तो कौन सी जगह है? विच इज़ द प्लेस वेयर डॉक्टर्स आर फाउंड एंड दे डायग्नोस द डिसीज? इट इज हॉस्पिटल. एंड द वर्ड ऑल्सो स्टार्ट्स विथ H. सो हम लिखते हैं स्पेलिंग हॉस्पिटल, H-O-S-P-I-T-A-L, hospital. So children, help doctors in diagnosing the disease. Which is the place where doctors diagnose the disease? So children, this is the place called hospital. Hospital is the place where we have doctors and these doctors diagnose the diseases of the patients who visit these hospitals. तो वो लोग जो कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं अपनी बीमारी लेकर के, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के, और वहाँ पे डॉक्टर उनकी बीमारी का डायग्नोस करते हैं. तो फर्स्ट आंसर इज हॉस्पिटल. देन सेकंड वन इज चिल्ड्रन हेल्प इन टाइपिंग लेटर्स. सेकंड वन हमारा है हेल्प्स इन टाइपिंग लेटर्स, L-E-T-T-E-R-S. What is that? Which helps in typing letters? तो यहाँ पे हम कहाँ किस जगह पे लेटर टाइप करते हैं चिल्ड्रन? Let us see the option. Here the option is, ऑप्शन जो है इसमें हमारे पास है, फर्स्ट लेटर है हमारा O. फर्स्ट लेटर इज O. सेकेंड, थर्ड वी हैव ब्लैंक, एंड फोर्थ इज I, and fifth is blank, and last one is E. So children, the word starts with O. This is the place where we type letters. So this is an office, children. This is an office. Letter also starts with O. तो यहाँ पे O है, हम लिखेंगे FFICE, office. So the answer is office. So children, in this question we had to guess the place where these works are done. हमें इन चीज़ों को पता करना था कि ये काम कहाँ होता है, किस प्लेस में होता है, और उस प्लेस के नाम को यहाँ पे हमें फिल करना था. सो चिल्ड्रन, हेल्प्स डॉक्टर्स इन डायग्नोसिंग द डिजीज.
दिस इज द प्लेस कॉल्ड एज हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में पेशेंट्स जाते हैं, डॉक्टर्स के पास अपनी प्रॉब्लम्स कहते हैं, एंड डॉक्टर्स ट्राई टू डायग्नोज देयर डिसीज, डॉक्टर्स ट्राई टू फाइंड देयर डिसीज. सो फाइंड आउट देयर डिसीज, तो यहाँ पे डायग्नोज करना, पता लगाना. तो ये प्लेस है हॉस्पिटल. और एच है स्टार्टिंग, तो हमें समझ में आ गया इट इज हॉस्पिटल. फिर सेकेंड वाला हेल्प्स इन टाइपिंग लेटर्स. यहाँ पे वो जगह जहाँ पे हम लेटर्स टाइप करते हैं. तो चिल्ड्रन, द प्लेस वेयर वी टाइप लेटर्स इज एन ऑफिस. द वर्ड स्टार्ट्स विथ ओ. इससे भी हमें पता चलता है कि आंसर ऑफिस ही है. अब हमने लिखा OFFICE ऑफिस. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर डी ऑल्सो. नाउ विल डू आवर लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन एक तरफ से फिल इन द ब्लैंक्स है और कुछ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन है. सो चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर डी. सॉरी, हमने अभी डी किया था, अब क्वेश्चन नंबर ई है. सो फिल, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, लेकिन यहाँ पे हाफ ऑफ द वर्ड इज गिवन, वी हैव टू कंप्लीट द वर्ड. तो यहाँ पे हमारे पास है फिल इन द blanks, BLANKS blanks. Fill in the blanks. First one is, children, first is you can listen to dash on computer. YOUCAN, can, LISTEN, listen to a box. You can listen to dash on the computer, the COMPUTER, computer. So children, now the letters given are, सबसे पहला वाला लेटर है M, and then we have blank, and then we have another blank I and C. हम क्या सुन सकते हैं? What is the thing which we can listen to the computer? वो कौन सी चीज़ है जिसे हम कंप्यूटर से सुन सकते हैं? So that is, children, music. And here also the word which is given starts with M, तो हम यहाँ लिखेंगे music. MUSIC, music. The word is music. Now second one, children, second वाला है, second में हमारे पास है you can play dash on the computer. YOU can play, PLAY, play dash on a computer. You can play dash on a computer. आप क्या प्ले कर सकते हो कंप्यूटर में? On a computer, COMPUTER, computer. You can play dash on a computer. So children, what you can play on a computer? Of course, children, we can play. पहले क्लूज देखते हैं क्या दिया हुआ. क्लूज में हमारे पास है फर्स्ट लेटर इज G, and then we have dash ES. So we can play what? We can play games. हम गेम्स खेल सकते हैं. प्ले क्या होता है? गेम्स होता है. तो G लिखा हुआ, ES भी लिखा है, तो श्योर हो गया कि इट इज GAMES, games. So we can play games on a computer. So children, here we have two questions. You can listen to music on the computer. You can listen to MUSIC, music, on the computer. You can play games on a computer. तो यहाँ पे हम म्यूजिक सुन सकते हैं और गेम्स खेल सकते हैं यूजिंग अ कंप्यूटर. सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल. With this we have completed our first worksheet. This worksheet was from chapter 1. Most of the questions were from chapter 1 and some of the questions were from chapter 2 also. So go through the worksheet, solve this worksheet, try to understand, and we will meet once again in our next video, children. Till then, learn all the questions or all the exercises which we have done in this worksheet, and try to learn the spellings also, because children, in computers we have big spellings or new spellings which are a bit difficult. Until or unless you write and learn these spellings, you won't be able to write the आंसर्स इन एग्जाम्स. तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग्स को लर्न करो. पिछले वीडियो में हमने वर्ड्स को यहाँ लिख करके उसको भी समझाया था. उन सारे वर्ड्स को भी आप लिख करके याद करेंगे. सो चिल्ड्रन, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. वी विल मीट वंस अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो and solve our second worksheet. Till then, thank you.